Good morning, students. Welcome back to our SSTA class. Today, we are going to start a new chapter, that is, chapter number 16, our rich heritage. Do you know what is It heritage? Is a special possession that an individual has, or we can say a property that is inherited. इसका मतलब होता है कि या तो कोई चीज़ सिर्फ हमारी या बहुत लोगों को विरासत में मिली हो. Come on, let's start the chapter. Heritage can be defined as something that is unique to a particular place, area, region, or country. India is rich in the art and culture that has been passed from one generation to the next. These includes various painting styles, folk and classical dance forms, traditional food and clothes, and literature. This is our heritage. Do you know हेरिटेज क्या होती है? यानी किसी जगह की फेमस चीज, किसी जगह की कोई फेमस पेंटिंग या उस एरिया का कोई भी स्पेशल प्लेस, ये सब हमें क्या मिली है? हेरिटेज मिली है, विरासत में. जैसे हम कह सकते हैं लखनऊ का चिकनकारी कपड़ा अच्छा है, दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे फोर्ट्स हैं, देखने वाली जगहें हैं, आगरा का all these ताजमहल. things कम्स इन हेरिटेज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ हेरिटेज. Varied heritage. Heritage falls under two categories, natural and cultural. Natural heritage. Natural resources such as minerals, flora and fauna, rivers and mountains are our natural heritage. Now natural heritage means जो heritage हमें nature से मिली है, means that is God gifted to us, that is minerals present in the earth, flora, fauna, plants and animals present on our earth, rivers and mountains. These are known as our natural heritage. For example, I say River Ganga is a natural heritage. Mount Kailash, Mount Everest, these are some natural heritage to us, right? Coming towards cultural heritage. Now, cultural heritage includes all man made things like some monuments, paintings, dance, literature, music, whatever the things are made by humans are included in cultural heritage. Cultural heritage. The historical monuments, inscriptions, paintings, dance, literature, music, and languages make up the cultural heritage of the country. Cultural heritage can be further divided into different categories. Let us learn about the cultural heritage of India. Now, cultural heritage includes monuments that everyone has seen, many monuments like Taj Mahal, Sun Temple, Charminar, Red Fort. These are the monuments. Inscriptions. What do you mean by inscription? Inscriptions are they are the written proof, whether it is written on a monument or in a book. इंस्क्रिप्शन एक रिटर्न फॉर्म होती है, या तो वो बुक में लिखी हो या किसी मॉन्यूमेंट की दीवारों पर लिखी हो. नाउ वी नो हाउ पेंटिंग इज पॉपुलर. वी ऑल्सो डू पेंटिंग. हम सब पेंटिंग करते हैं. थ्रेड पेंटिंग हो गया, क्लॉथ पेंटिंग हो गया, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म, लिटरेचर, म्यूजिक और जो भी लैंग्वेजेस इंडिया में है वो सब क्या है? हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमें एज अ कल्चर विरासत में मिली है. Now come on, let's talk about first point, that is architecture. The ruins of the Indus Valley civilization, palaces, forts and other monuments are the examples of rich architectural heritage of India. They give us important information about the life led by the people in the past. There are many magnificent monuments located in every corner of our country. Look at this picture of some monuments. For example, when we talk about the architecture, India is having one of the most finest architecture. For example, the Indus Valley civilization. When you will grow up to class 6, you will got to know what is Indus Valley civilization. It depicts how the early people have made the drainage system so beautifully and so neatly, right? So all thing about Indus Valley civilization is the famous drainage system of Indus Valley civilization. वो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही
फेमस थे। नाउ पैलेसेस जिसमें राजा महाराजाज रहते थे। सेम गोज विद द फोर्ट्स। कुछ और एग्जांपल्स है जो बहुत अच्छी हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलती है कि वे ऑफ डिजाइनिंग। आप टेम्पल्स देख सकते हैं, सन टेम्पल देख सकते हैं, राइट। तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर किया है। फॉर एग्जांपल इन साउथ देयर इज़ अ मीनाक्षी टेम्पल। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि पहले के लोग पास्ट में कैसे जिया करते थे। तो हमारे पूरी कंट्री में बहुत सारे मैग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखकर हम बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बना दिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइट मार्बल वर्क, कि वाइट मार्बल में कितना अच्छा वर्क किया जा सकता है। So here are some examples given: Sun Temple, Taj Mahal, Sanchi Stupa, Charminar. These all are the examples of architecture. Coming towards the next point, that is paintings. Painting. There are two types of painting that are shown in the picture. The first one is Tanzori painting that is done in Tamil Nadu, and second one is Madhubani painting that is done in Bihar. Come on, let's read about paintings. Paintings as an art form has flourished in India from very early periods. Indian paintings can be broadly classified as murals and miniatures. Murals are done on the wall, for example, the Ajanta and Ellora paintings. Miniature paintings are done on a small scale on paper or cloth. Let's read the fast fact also. The paintings at Ajanta and Ellora are more than 15,000 years old. Back then, natural vegetable dyes were used for coloring. Now you can see that पेंटिंग बहुत पुराने टाइम से चल रही है और वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मुरल्स एंड मिनिएचर। मुरल्स का मतलब होता है जो पेंटिंग्स दीवारों पर की जाती है, जैसे कि अजंता एंड एलोरा केव्स में की गई है। द सेकेंड वन इज मिनिएचर पेंटिंग, जो हम लोग भी करते हैं किसी पीस ऑफ क्लोथ एंड पेपर पर। और पुराने टाइम पर जो कलर्स यूज होते थे वो वेजिटेबल और फ्रूट्स या फ्लावर्स को ड्राई अप करके उनका कलर यूज होता था, राइट। जो एज अ पेंट यूज होता था। अब तो आप लोग यूज करते हो फैब्रिक कलर्स एंड ऑल, बट उसमें पहले यूज होता था नेचुरल वेजिटेबल डाइज, राइट, और फ्लावर्स। उनको ड्राई करके वो उनका कलर पाउडर बना लेते थे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हैंडीक्राफ्ट। व्हाट डू मीन बाय हैंडीक्राफ्ट? यस, हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो भी चीज हाथ से बनी हो। नाउ वेरियस थिंग्स आर देयर जो इंडिया में हाथ से बनाई जाती हैं। पहले इंडिया में कोई मशीनरी नहीं थी, तो हर चीज़ हाथ से बनती थी, चाहे वो कढ़ाई हो, सिलाई हो, कोई पॉट मेकिंग हो, है ना, कोई आर्ट वर्क हो, कोई स्टील वर्क हो, तो सब कुछ हाथ से होता था। बट नाउ वी आर हैविंग सम मशीन्स ऑल्सो दैट कैन मेक आवर वर्क ईजियर। Handicrafts. India has a rich tradition of handicraft. Bidri work, terracotta pottery, and brass work were famous all over the world. Varied and beautiful embroidery styles are widely popular. Now जो इतने भी हाथ से होने वाले काम हैं वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें ये विरासत में मिला है पेरेंट्स से अपने। एज गिवन बिद्री वर्क इज डन ऑन मेटल्स। बिद्री वर्क इज बेसिकली डन ऑन मेटल्स के ऊपर बहुत बारीक कारीगरी की जाती है, डिजाइन बनाए जाते हैं, तो दैट इज नोन एज बिद्री वर्क। नाउ आफ्टर दैट कम्स टेराकोटा पॉटरी, जैसे आप इमेजेस में देख सकते हैं कैसे मिट्टी को लेकर उस पर यूनिफॉर्म चीज़ें बनाकर या वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर डिज़ाइन बनाकर या ऐसे यू कैन सी a net design is made that is famous all over. Now brass work. What do you mean by brass work? ये ब्रास पर करा जाता है, सेम एज मिनिएचर पेंटिंग। छोटी छोटी की बारीकियों से उसको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करा जा सकता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। See, first one is the example of Bhitri work, that how it is done on a metalware. After that is the example of brass work, and the last one is the example of terracotta dance. India is well known for its classical and folk dances. The classical dances forms have set of rules that have been followed traditionally over the years. Apart from the graceful hand and leg postures and movements, the dancers show various feelings through their facial expressions. The classical dances of India are Bharatanatyam, Kathak, Manipuri, Odissi.
Kuchipudi, Kathakali, and Mohiniyattam. The folk dances are performed by the people on special occasions such as wedding, harvest festivals, and the popular folk dances of India are Garba and Dandiya, Bihu, Chirau dance, Bhangra and Gidda, and Kumar. You can say basically we are Indians, we love to celebrate. So for celebration we use dance, right? So there are different types of dance. Number one is classical, that is done in a traditional form. Another one is folk dance. Now folk dance are done on basically on special occasion like harvest festivals and wedding. As people in India do celebrate the harvest festival very well. So we are having some dances that are performed in different states when it is the time to harvest the crops. इंडिया में दो टाइप के डांस ही होते हैं. फर्स्ट वन इज क्लासिकल एंड सेकेंड वन इज फोक डांस. क्लासिकल जो होता है दैट इज परफॉर्म्ड ट्रेडिशनली. उसके कुछ रूल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं जिनके बिना वो डांस बिल्कुल इनकम्प्लीट है. तो क्लासिकल डांसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी. नाउ वी लिव इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लासिकल डांस जो लोग सीखते हैं दैट इज़ कथक. आफ्टर दैट फोक डांसेस जो कभी कभी परफॉर्म होते हैं जैसे शादियों में, राइट, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में. सो सम डांसेस दैट आर परफॉर्म्ड एज फोक डांसेस आर गरबा, डांडिया. बिहू असम में होता है, चिराऊ डांस मिजोरम में होता है, पंजाब में भंगड़ा एंड गिद्दा करते हैं, राजस्थान में हम घूमर करते हैं. तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डांस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजिक. जब हम डांस करते हैं तो डांस करने के लिए म्यूजिक भी तो चाहिए. तो नाउ देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया दैट आर हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सेकेंड वन इज कर्नाटक म्यूजिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक जो दैट इज डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप हुआ है, अलॉन्ग विद क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके में हम कुछ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जैसे सरोद, फ्लूट, तबला एंड सितार. नाउ कर्नाटक म्यूजिक का मतलब क्या होता है? जो म्यूजिक साउथ की साइड में डेवलप हुआ, द म्यूजिक दैट इज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया अलॉन्ग विद क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, घनातम, हारमोनियम, फ्लूट एंड मृदंगम. राइट, so these are the examples of carnatic music. तो दोनों हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक अलग अलग है क्योंकि उसमें दोनों में अलग अलग क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है. So this was all about the chapter. I hope you have got the chapter